Hello, my name is Dr. Bedi. I work as an orthopedic consultant in Fortis Hospital, Vasant, Kunj. So in collaboration with Healthcare at Home, we have produced a small series of videos for common problems जो आपको orthopedics, joints, bones की होती हैं. We hope कि आपको इनसे कुछ अपने questions का जवाब मिलेगा और कुछ clarity मिल जाएगी अपने problems के बारे में. ये जो lecture है that is on back pain. So this is the way I have actually looked at the question जो ज़्यादातर मेरे से लोग OPD में पूछते हैं. कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, हाउ डज अ नॉर्मल बैक वर्क, व्हाट हैपेंस जब स्पाइन जब डीजनरेट हो जाती है, किसी को ज़्यादा किसी को कम क्यों होती है, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए, कौन कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी. सो हाउ इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए कि बैक पेन कितनी इंपॉर्टेंट है. इसकी इंपॉर्टेंस ये है जी कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इन लाइफ विल फेस बैक पेन सम टाइम और द अदर. सम पीपल मोर ऑफन, सम पीपल लेस ऑफन, बट देयर इज नोबडी हु अगर आप जाके पूछें, उससे पूछें कि आपको कोई बैक पेन हुई है, तो कभी कोई मुश्किल से होएगा जो बोलेगा जी कभी नहीं हुई. सो अगर सारी हेल्थ केयर प्रॉब्लम में देखा जाए, मैं लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बोल रहा, सारी लाइफ केयर प्रॉब्लम देखा जाए, तो इट इज वन थिंग विच इज पॉसिबली द कॉमनेस्ट. एंड अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए द कॉमनेस्ट डिसेबिलिटी नॉट डेथ, देन इट स्टैंड्स आउट as a commonest cause of disability in the whole world. So it can affect every age, from school going children to middle ages to elderly kind of stuff. The problem is also it is actually increased. The amount of disability from back pain 12% बढ़ गई है पिछले 20 सालों में. And अगर overall देखा जाए, the number of people who had disability with this is risen about 54% in 25 years. यूरोप में इट इज द कॉमनेस्ट कॉज. अगर कोई देखा जाए कि somebody people going off medical leave पे जा रहे हैं, तो कॉमनेस्ट कॉज इज बैक पेन. And you lose so many work days, so many work hours because of the amount of this thing. So it has implication not for the health, I know वो तो है ही है, but also for the overall economy as well, because it's a huge cost spending, and the amount of money spent is not just by the organization, but by doing MRIs, buying more and more medication, getting X-rays, going to hospitals, getting operations. So it's a very, very common thing. So America spends about $50 billion each year for back pain. 3.5 million people are affected in America. Unfortunately, these figures are very easy to get from overseas, but हमारे यहाँ पे statistical data correction is maybe not that common. So that's why I'm referring to these people. So more than about 6 million people in USA have chronic back pain. So it really is an important healthcare problem. So how does a normal back work? The normal back का हमारा function है basically it connects the upper part of the body to the lower part of the body. So it basically transfers the upper part of the body का weight to the lower part of the body. So एक तो weight transference हो गया, that was very easy अगर एक stiff सा structure होता. But not only do we have to have a weight transfer, but हमने इसमें flexibility भी लेके आनी है, because we need to allow a lot of movement. So we know about the front and the backward bending, but also the sideward bending which happens. So it is a link which gives you stability plus also gives you the movement. So there are different parts of the neck. जो गर्दन का पार्ट ऑफ द सर्वाइकल कहते हैं, बैक ऑफ द चेस्ट को thoracic कहते हैं, लोअर जो कमर होती है उसको lumbar, and the lowest most part is called the sacral spine. So in the lumbar, it's basically the neck and the lower part which is much more vulnerable because they are unstable structures. उनके आगे पीछे सिर्फ muscles हैं जो उनको रोक के रखी हुई हैं. So अगर हम सिर्फ lumbar की बात करें, there are about 5 vertebrae in there. They link to each other with ligaments and all. So this is the curvature of the spine, and these are the ligaments जो support करती हैं vertebrae को. Vertebrae are actually building blocks, जैसे बच्चों के blocks होते हैं put on one top of each other, but they're all in a chain. It is like a linked up chain. So they're all connected to each other. वर्टिब्रल बॉडीज के पीछे के साइड में यहाँ पे नर्व्स जा रही होती हैं. तो अगर ऊपर से देखा जाए तो ये नर्व्स पड़ी हुई हैं जो नीले रंग की हैं. ये वर्टिब्रल बॉडी, ये आगे है, ये पीछे है. दिस इज द बैक ऑफ द बॉडी. यहाँ से हर लेवल पे नर्व निकलती रहती है अपनी, और हर वर्टिब्रल बॉडी के बीच में देयर इज अ डिस्क which is a cushion between the vertebral bodies. Now the problem with this is that the nerve is very vulnerable because अगर इस बोन में कुछ भी हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अगर डिस्क बाहर आ जाए, तो यू कैन हैव अ प्रॉब्लम ऑन द नर्व बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन. सो दिस इज द वर्किंग यूनिट, मतलब कि जस्ट अ सिंपल वर्किंग यूनिट. ऊपर का वर्टिब्रा, नीचे का वर्टिब्रा, बीच में देयर इज अ डिस्क. नाउ देयर आर लिगामेंट्स ऑन द फ्रंट एंड द बैक. सो the commonest movement जो होती है, which is this movement which you can see, इसके अंदर आगे की तरफ दब गए, पीछे की तरफ दब गए. The vertebra compressing in front, vertebra compressing.
The problem with this is the disc. Now the disc is like a balloon stuck in between two hard objects, because a disc के अंदर normally fluid वगैरह होता है. So अगर तो even pressure पड़ता रहेगा जैसे यहाँ पे है, then तो it is okay, it will tolerate the pressure. प्रॉब्लम ये होती है जब prolonged uneven pressure, मतलब कि आप eccentrically लोड कर रहे हो डिस्क को, एक साइड से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो दूसरी साइड से नहीं, तो अगर बहुत देर बनाए रखोगे तो इनवेरिएबली डिस्क की शेप थोड़ी सी बदल जाती है, और इवेंचुअली अगर प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है तो डिस्क कैन एक्चुअली रप्चर अर्ली. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्कल प्रेशर. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच यू वुड पुट जब आप लेटे हुए हैं, तो बहुत ही कम प्रेशर है, 20-22 के आसपास. खड़े होते हैं तब भी मतलब कि कम ही होता है. सबसे ज्यादा प्रेशर, दिस इज द पोजीशन व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट बैड फॉर यू, कि अगर आप आगे झुक के बैठे रहें, which you would do in your office work or something, or a simple bending, suddenly the pressure increases from there and goes up to 7 to 8 times with these kind of activities. So that's why जब भी लोगों को बैक पेन वगैरह होती है, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं जाके लेट जाए, बिकॉज प्रेशर कम हो जाता है. So स्पाइन के अंदर जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है वो डिजेनरेशन की होती है. There is a small group जिनको एक्यूट लो बैक पेन होता है, that is a slightly ambiguous सा है, मतलब कि आप पता नहीं चलता किस चीज से आ रही है. एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज बिकॉज most of them are injuries to the muscle, ligaments, joints or the disc, and the nerve supply of these is very very common, so you cannot actually easily make out कि जी यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है. but ज्यादातर ये जो muscle, ligaments, joints वगैरह की होती हैं, they will settle down in majority of the people. अगर नहीं settle down हो रही, then we start to look for other causes. So now let me come to the chronic pain, जो long standing chronic pains होती है. So this is an example of what happens to the disc through the ages. So normally healthy disc, healthy vertebra, nerve coming out from there, simple. ये साइड का व्यू है. विद टाइम ये डिस्क दबती जा रही है, सो द हाइट इज ओवरऑल यू कैन सी इज डिक्रीजिंग, एंड इवेंचुअली द डिस्क ऑलमोस्ट डिसअपियर्स, व्हिच इज डिस्क डीजनरेशन. Look at the problem that is having. One is the disc can actually come out from the back. Once it comes out from the back, जो पीछे नस पड़ी होती है उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है. प्लस लुक एट द होल, यहाँ पे इतना बड़ा एरिया था जहां से डिस्क नर्व निकल रही थी, यहाँ पे आते आते इतनी पतला सा एरिया आ गया है जहां से नर्व निकल रही है. So nerve is now getting compressed. Same thing is seen in the front as well. Simple, long, अच्छी height, धीरे धीरे करके disc collapse हो गई, extra bone form होनी शुरू हो गई, and the whole thing is now degenerate. So disc के अंदर basically जो what can happen is, या तो सिर्फ bulge कर सकती है बाहर की तरफ थोड़ा बहुत, या फिर एक पीस बाहर ही निकल सकता है, या फिर पड़े मगर डिस्क की हाइट लूज हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी लूज हो सकती है. And the worst thing that can happening is your thinning of the disc. So as a disc keeps on getting उसकी function जैसे कम होते रहता है, so it can become dysfunctional. But the other element is instability. So दो vertebrae के बीच में excessive movement शुरू हो जाती है. कई बार it will stabilize और दोनों की दोनों bones पास में आ जाएंगी, and eventually you'll have less of movement. But हमेशा वो नहीं होता. So the sequelae of disc degeneration is you can have just a compression or you can have an instability. Instability का मतलब आगे पीछे की मूवमेंट शुरू हो गई, लिस्थीसिस कहते हैं कई लोग इसे. एंड द अदर थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज आर्थराइटिस. ये जो जोड़ होते हैं डिस्क के बीच में, उनमें आर्थराइटिस शुरू हो सकती है. दिस इज द फोटोग्राफ शोइंग डिस्क बाहर आ गई है नस के ऊपर. दिस इज द फोटोग्राफ विच शोइंग कि डिस्क जब डीजनरेट होती है तो पीछे की तरफ जाती है और वहां पे वो प्रेशर लगाती है. दिस इज पुटिंग इन अ टैबुलेटेड फॉर्म. डिस्क बाहर आना, नस को दबाना, जिसमें सिर्फ धीरे धीरे करके आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, डिस्क कोलैप्स हो रही है, एक्स्ट्रा बोन बननी शुरू हो गई. इसमें भी वही वाली कहानी है, डिस्क कोलैप्स हो गई. दिस इज एन इंस्टेबिलिटी व्हिच इज टू से कि वर्टिब्रल बॉडीज आगे पीछे मूव करनी शुरू हो गई. सो हु गेट्स मोर बैक पेन? सो मोर बैक पेन इज सीन द मोर सेडेंटरी यू आर. सरप्राइजिंगली जो लोग कम इस्तेमाल करते हैं बैक को, बट दे पुट योर बैक इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन, दे आर द वंस हु गेट इट. Women get it a lot more, a lot of them, because their anterior abdominal mass जो होता है that is very little, mainly because of pregnancy, obesity, lack of activity, and overall muscle strength in women is known to be poorer, so they are much more prone. Overweight individuals who've got a lot of mass in the front, they are much more prone. People who carry very heavy loads, and if you have very very poor muscle mass. So one of the most important muscles that we talk about now, अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से बात करेंगे, कोर मसल्स. ये जो पिंक में जो शेडेड है ये सारी कोर मसल्स हैं. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स जो आपकी लोअर पार्ट ऑफ द बैक को स्टेबलाइज करती है. सो व्हेनेवर समबडी स्टार्ट्स टू हैव अ प्रॉब्लम, वी नॉर्मली टेल देम कि अपनी कोर मसल्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए. दे विल हेल्प यू स्टेबलाइज द बैक. सो इतनी कॉमन प्रॉब्लम क्यों है? कॉमन प्रॉब्लम इसलिए है कि मेनली बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग. वी ऑल
put our back into some sort of a funny situation, like this kind of a thing in which you will, rather than sit with the back fully supported, we sit with us bent forward. Then these are the other positions which are actually very, very difficult to manage because of this. This is some of the other things that you will see every day in your life. सोफे पे सोना, लैपटॉप लेके बेड पे बैठना, टीवी बेड पे लेट के देखना. So these kind of things are all. This is an example of what happens when you slouch compared to बिल्कुल जब लटक के बैठ जाते हैं compared to the other things. And these are the sort of position which you should not really be doing. Your own body posture itself can actually make a huge difference. So this is an example of what you should be doing, and this is an example of what normally people do. So you can well imagine कि back के ऊपर कितना stress आ रहा है because this kind of a position is developing. सोने के वक्त पहले के ज़माने में all the beds were more मंजियाँ होती थी. So you were sagging into the bed. That was a very bad idea. But having said that, even a hard bed is a very, very bad idea. So the present suggestion nowadays is you have a mattress जो आपकी body के साथ curve कर जाती है and support करती है आपके back को, arches को. So अगर investigations करना चाहें तो क्या कुछ कर सकते हैं? X-rays करके देख सकते हैं. Just to give you an idea, ये normal आपका lumbar vertebra हो गया, एक के ऊपर एक हड्डियां लगी हुई हैं. ये होता है जब वो खराब हो जाती हैं, बीच में डिस्क खराब हो जाती है और हड्डी से बैठनी शुरू हो जाती है. So इनके बीच में जगह बढ़ जाती है. आप MRI करके भी देख सकते हैं. MRI के अंदर डिस्क बड़ी आराम से नजर आ जाती है, नसें भी नजर आ जाती हैं जिनके ऊपर प्रेशर आ रहा होता है. But the only thing to remember is it's not that everybody should run around and get an MRI scan. So it is because the MRI scan does not correlate totally with the idea कि आपको MRI scan आपका ऐसा है तो आपको बैक में इतनी प्रॉब्लम होगी. So lot of people will actually not have back pain although the MRI scan is bad. मगर अगर आपको सर्जरी होने वाली है या आपकी नसें काम करनी बंद करनी, then you are definitely a candidate who should have some kind of investigation. Normally X-ray and MRI दोनों की जरूरत पड़ती है. So what you should be doing to avoid problems, I mean you should really maintain your posture, exercise regularly, lifting वगैरह के लिए you need to do it very correctly. Don't get overweight at all. Smoking is terrible for you. Make sure that you get enough calcium and vitamin D and don't be sedentary. So जितनी mobility रखेंगे उतना you're a battle. Half of the battle is also your mind battle. So you need to make sure that your mind is actually proactive and moving towards a feeling of well-being. ज्यादातर लोग जैसे ही कुछ थोड़ी सी दर्द होती है वो अपनी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. उसके बाद वो every time they want to do some activity they keep thinking कि दर्द हो जाएगी और वो एक्टिविटी और कम कर लेते हैं. So it's like a cycle. So जैसे एक्टिविटी कम होती जाती है मसल्स और वेस्ट होते जाते हैं, जॉइंट्स और स्टिफ होते जाते हैं एंड पेन बढ़ती जाती है. So this is what you need to fight the mind battle. So when you go to get the control on your body rather than let the body just control your mind. You should not see this back pain as a psychological trauma. So when you talk about treatment options, you do lifestyle modifications. You can change the way that you work. You do your things, how you cook, how you eat, those kind of things. So you but ideally, if things are not getting better, you get an evaluation from the doctors, get some investigation done. You can try some belts, braces, वगैरह. दवाइयाँ भी कोशिश कर सकते हैं. Physiotherapy is very, very helpful. You can even go for some selective injections वगैरह. So मैंने सोचा last में आपको just do a little bit more on things like posture control is very, very important, especially people with big bellies or very thin scrawny जो आगे की तरफ lean करते हैं. That normally is a very, very bad thing. So make sure that your posture is right. There are obviously lots of exercises with it. You can do it with yoga, aerobics, physiotherapy, tai chi. It's up to you. But essential thing that would say is these are some of the simple exercises. I'll go to the pelvic tilt, where you press your abdomen down. This one in which you get जो अपने घुटने को अपने छाती के साथ लेके आते हैं, घुटने को side to side movement करते हैं. I think इसे cat or camel pose कहते हैं. आपकी back को press is a downward pressing and upward pressing of the back, sideward bending, lifting your. इसमें I think योगा का अंदर इसका नाम भी है, lifting your backs, making a bridge kind of a variety in which your abdomen is getting lifted. Wall के ऊपर slide करना, doing the stairs one step back forth वगैरह करना. Then again lifting it up so you can work on your abdomens are very, very good. So everybody doesn't need to go and see a doctor. There are red flags जिनमें आपको जाना जरूरी होता है, especially अगर आपकी बहुत कम एज है या बहुत ज्यादा एज है. Then you should go. अगर आपको सुनपन आना शुरू हो गया है, कमजोरी आनी शुरू हो गई है मसल्स में, आपके you have a history of a cancer, अगर आपको लग रहा है कि आपके यूरिन और स्टूल का कंट्रोल खत्म होते जा रहा है,
या फीवर वगैरह आ रहा है, then you should really go and see a doctor because there are a lot of options which can be there. So essentially back pain is a manageable thing अगर आप कोशिश करें along with your help from your physiotherapist, doctors or any other person. It is a manageable thing, but you need to do more active steps there, and you can always seek medical advice depending on the requirement. Thank you so much. So we'll just take a few questions which have come. So this is from Vinod Uppal. Vinod says, I'm 36 years old, back pain from long working hours, sitting job. How can I be free from the pain? Vinod, the answer is activity. The answer is exercise. The answer is breaks, frequent breaks. काम किया फिर mobility की, काम किया फिर mobility की. The more you do it, the better it is for you. So treatment is in your hand. Mukhtar Mullah says, I'm 50 years old. I have cervical pains in 3 years. So I'm going to take this question again because there is another talk on neck pain. This is from Geeta Prakash. I have back pain, shoulder pain. I feel there is no blood circulation in the area. I'm type 2 diabetic, 25 years. I'm on medication. So Geeta, from what I can understand is that when you say no blood circulation, मेरा ख्याल से आप जो कहना चाहते हैं कि आपको हाथों में सुनपन शुरू हो गया है. मेरा अपना मानना है कि अगर आपके हाथों में सुनपन आ रहा है or you feel कि there is a weakness, then I think you should try to get more investigations done. So maybe an X-ray or an MRI scan वो देखना पड़ेगा. Soumya Prakash Sahu says I'm suffering from left-sided pain above the back. Mr. Sahu, the answer to your question is most likely अगर आपका पेन सिर्फ बटक के एरिया में है एंड लेग्स के एरिया में नहीं जा रहा, तो आपकी पेन बैक के जॉइंट्स में से आ रही है. बैक के जॉइंट्स समटाइम्स गेट अफेक्टेड आफ्टर द डिस्क कोलैप्सेस एंड उनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाता है. व्हाट यू नीड टू डू इज वर्क ऑन योर flexibility of the back and strengthening of the muscles in the back. So if you work on flexibility and strengthening, you should really be able to manage this pain. Pallavi Srivastav says, I have back pain both in the lumbar and the cervical region. Pallavi, the answer is what my lecture was totally about, that the solution, the first port of call, जो अगर पहली solution है, that depends on you actually getting more active, getting leaner and thinner, making sure you don't have things like vitamin D's and vitamin B12 deficiencies, making sure you don't have anemia. So working out more, walking more, getting outside the house more, that normally will work out quite well. Ruxana Hassan says that back pain after getting up from the bed is sometimes relieved with exercises, but heel to left leg pain is quite bad. Ruxana, जो आप समझा रहे हो, that is most likely a nerve impingement, मतलब कि नस आपकी दब रही है. ज़्यादातर अगर आप 50 साल से कम है तो डिस्क हैज टू बी द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम व्हिच इज प्रेसिंग ऑन द नर्व. उसके बाद कई बार जो बैक पेन के अंदर आर्थराइटिस शुरू हो जाती है उसके कारण नस दब रही होती है. अगर आपकी नस दब रही है तो शुरू में देयर आर नर्व मेडिकेशंस व्हिच कैन बी ट्राइड, समथिंग लाइक प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, ट्रिप्टोलिन, ट्रिप्टोमर. So these are all medicines which are available very easily, but ideally I would request you to see a doctor if you take that off. Nerve pain responds better to medication. They can also be treated with an injection. Back pain, however, does not respond well to these medications. Pankaj Pandey writes, every morning after I wake up I'm having back muscle pain. Pankaj, this is such a common problem. I see somewhere about 3 to 4 people with exactly the same problem. And the answer lies in Pankaj, आप अपनी level of fitness better कीजिए. Most of these people whom I see, they are traveling on their motorcycles for long distances. They are working from 8 o'clock to 8 o'clock. They really do not take out much time. Even a body needs a servicing, जैसे कार की servicing की ज़रूरत होती है. So unless you spend little time working on your body, it will not work out for you. It does not mean कि आपको जिम जाने की ज़रूरत है. Basically means आप अपनी जितनी मोबिलिटी कर सके, जितना पोस्चर कंट्रोल कर सके, सिटिंग ऑन अ कंफर्टेबल चेयर, इवन व्हेन यू ड्राइव अ बाइक, कीपिंग योर एब्डोमिनल मसल्स taut, small things can make a big difference. Thank you so much.